Very good evening. So this is for those who are attending online. Am I audible to you, my dear friends? Yes, sir. Okay, great, great. So let us start. So again, very good evening to one and all, and I believe there is a good mix of the students coming from second year and third year, because this course is for second year computer engineering, as well as I believe it has been part of an curriculum of third year students, maybe belonging to an electronics and telecommunication department. I'm not very much sure about that. Yes. And yeah, okay, so thank you. And this, I believe, for your generation, this is one of the very important course, and it lays down the foundation, especially for those who are looking for their career in the field of IT, and for those who are aspiring for higher studies. And if we look at the recent trend, we find that irrespective of your discipline and branches, most of them, they are opting for some of the buzzwords and very disruptive technologies, what we are talking about nowadays, something like a machine learning and data science, and okay, and so on and so forth. So I believe that my experience tells me, and I don't have to disclose my experience to you, just look at my head and you will understand. Okay, so my experience tells me that this is one of the course which really lays down the foundation. So welcome you all again for this course and introductory session from this person, this Sachin Deshpande. And for your generation, I believe you people already have you know the importance of the data, and because nowadays we keep on saying that data is a new fuel, and it is one of the asset what everyone is looking for. Just excuse me. Yeah. So these are some of the snippets what I've collected, which allows us to understand what exactly and what is the relevance of data as far as in today's time is concerned. So data is precious, and then everyone is looking for a kind of a transformation. I believe you people know what exactly is the data. We normally say that, traditionally speaking, and if you look at the textbook definition, there is a practice of saying that and data is nothing but a raw fact. It has originated from a word datum, so it is a raw fact. And then we are talking about transformation of a data into information, and information into insight, and insight gaining and wisdom. So very important. And then as the survey says that 21st century happens to be basically those who are really playing with the data. Okay, now my dear friends, this is slightly at the lighter sense, in a lighter mode. I believe you people know there is one song, Itni Shakti Hame Dena Data. So if you just we try to reiterate that. So I nowadays, at least I can say that Itni Shakti Hame Dena Data. So that is how the relevance of this data word comes into the picture. And then rest basically is something what everyone is talking around, like there is a fierce competition happening around, and the corporate basically those who are at the higher positions, those who are decision makers, they are really in the hunting mode. They are looking for some valuable and right information at please right time, and probably if they get right information at right time, they can take a right decision, and this may lead to the success of the organization. So that is the reason everyone is in hunting mode. And then I believe you people know that lot of revenue is getting generated out of just collecting the data, and there are industries and they only survive collecting the data on different as many avenues as they are there. So be it social media, or be it you doing some transaction somewhere, they obviously try to capture your data and they sell this data.
and there are takers also. So because the data is a new fuel we talk about. And again, this is also on a very lighter sense. I don't know, your generation knows this very popular movie. Can you recognize this movie? Which is this movie? Hey, great, Diva. So all-time favorite. So there is one dialogue, basically Amitabh and a dialogue in between two brothers, and Amitabh not exactly reiterating that dialogue, but then okay, telling to Shashi Kapoor that मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, and दौलत है, and blah blah. And Shashi Kapoor says that okay, मेरे पास माँ है. So if at all this movie gets recreated, and then from today's your perspective, those who are really okay crazy about the data, so possibly they will say that now it should be Shashi Kapoor saying that mere paas data hai. So for dear friends, welcome you for this very relevant course, I believe, for your generation, irrespective of your discipline. And I request one more thing. In fact, it's my request to those who are attending the session in the online mode. If at all you have queries, I'll prefer to take a pause in between, somewhere 15-20 minutes, and I wish you will be raising your queries at that time and not in between. Otherwise, in a hybrid mode, things becomes very difficult for me. And at my age, I'm not that flexible as my younger colleagues. Probably they are dealing with all these things. So this is my request to you all guys. And my dear friends, this is a very typical way of putting Screen a is not figure. fully shown. Yes. Screen Hello. is not fully shown. Screen is not fully visible. Okay, great. Just wait. I'll try. Just wait. Just wait for a while. I'll try to do that adjustment. Normal. Any of you can help me out? Just check. Screen दिसत नाहीये त्याला. Click on the Screen got it. दिखायचं. आता दिसतंय का? Is it visible now? नहीं ना? ठीक है. ठीक है यार, this is the first session and give me 10 minutes. I'll do that adjustment. Okay? Are you okay with this? Hi. Hello. Yes, sir. Okay, great. So Sir? what I'm trying, yes. Sir, can you please click on that got it because it is occupying some screen space. Just wait. I'll give me a minute. Okay. इथे दिसते. Those who are attending online ना, ते म्हणतायत की त्यांना ती स्क्रीन अशी दिसते. फुल स्क्रीन करायची. इथे बरोबर दिसते, त्यांना दिसत नाहीये. तू ऑनलाईन आहेस? राइट क्लिक करा त्याच्यावर. राइट क्लिक करा. हाइड प्रेझेंटेशन व्ह्यू करा. प्रेझेंटेशन तुम्हाला पाहिजे का? हाइड करा ना प्रेझेंटेशन.
विचारतो. Is it done now? Yes, sir. Yes, sir. So, thank you. So I was talking about, it is a very typical traditional way of putting the fingers and introducing this course, talking about some relevance. And for this to happen, we need to really, for we to understand the relevance of इसका importance क्या है ये समझने के लिए, we need to also understand the traditional way in those days they used to rely on. Now, if I ask you how you can frame the definition of database DBMS stands for database management system. So anyone, I believe, can easily frame it in the most simplest and in the most natural manner, that the database management system is a system which is meant for managing the data. As simple as like this. And that is very much true. Now, if I ask you what is your opinion about database? What do you say? So someone will say that database appears to be a collection of and repository, collection of data. But that is also true. So prior to the introduction and existence of this system, database management system, earlier approach was to dump the related data in files and use files for obviously, okay, performing variety of operations on the data which is stored in the files. And that approach normally, traditionally, we call it as a traditional file processing approach or a conventional file processing approach. These are the nomenclatures. And you open any book, you will find that these are very standard terminologies which are used. क्या कहा मैंने? Traditional file processing approach या conventional file processing approach. तो अब ये ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच वेदर इट हैज गॉन ऑब्सोलीट, काल बाह्य झालेला आहे का, तो अभी है ही नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है. बेसिकली जो भी अप्रोच है जिस पर्पस के लिए वो सबसे फिजिबल अगर है तो वो अभी भी है. ओके, लेकिन उस दौर में कुछ डिसएडवांटेजेस, कोई पोटेंशियल थ्रेट्स, पोटेंशियल ड्रॉबैक्स ऐसे एक्सपीरियंस किए गए, ऐसे देखे गए. Those used to employ very much into basically, okay, the information and information processing, and possibly those drawbacks have prompted the development of, aisa hi hota hai na, evolution. How evolution happens, there is a practice of saying that, okay, the need is and necessity is mother of what, क्या कहते हैं हम लोग, इन्वेंशन. तो जब तक वो महसूस नहीं किया गया, एज लॉन्ग एज द नीड इज नॉट फेल्ट, नई चीज सामने आएगी नहीं. और जब महसूस किया जाता है कि अरे यार इसमें ये मॉडिफिकेशन जरूरी है, तो कोशिश भी होती है, द एफर्ट्स टुक्स प्लेस, एंड जनरली इफ यू आर पुटिंग द एफर्ट्स, समथिंग विल कम आउट ऑफ दैट, एंड दैट इज वेरी मच एप्लीकेबल टू ऑल सॉर्ट ऑफ इवोल्यूशन. जो भी नए सिस्टम्स आते हैं, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, ये सेम पीछे, उसके पीछे जो छुपा है यही क्राइटेरिया होता है. तो एक स्टोरी है यहाँ. So let me talk about basically what is exactly the traditional way they used to employ for processing the data, and we call it as a conventional or traditional file processing. तो उसका एक very characteristic क्या है कि फाइल क्या होता है? फाइल basically is collection of some related records. Collection of similar type of records is nothing but what? File. And आपको अगर आपके secondary storage में, जैसा hard disk for example, उसमें कुछ भी सेव करना है तो इट शुड गेट रिकॉर्डेड इन फॉर्म ऑफ व्हाट. आपको कुछ भी सेव करना है, चलो सेकेंडरी स्टोरेज पे, हार्ड डिस्क पे, कैसा सेव करोगे आप? एक फाइल के नाम से ही जाएगा ना. इट ऑलवेज गोज विद सम फाइल, एक्सटेंशन कैन बी एनीथिंग. इफ देयर आर इमेजेस यू विल फाइंड दैट इट्स JPEG एंड ब्ला ब्ला. इफ इट इज अ डॉक्यूमेंट देन यू विल फाइंड दैट इट इज डॉक्स एंड डॉक्स, समथिंग लाइक दैट. ये सुनो, तो फाइल के फॉर्म में जाता है और फाइल में आपको जो मिलेगा वो डेटा है. तो एक जो अर्लियर अप्रोच था उसका एक वेरी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी खासियत ये थी कि हर एक एप्लीकेशन जो होता था वो एक इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन समझा जाता था. एवरी एप्लीकेशन नॉर्मली यूज्ड टू बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन. अभी ये डायग्राम में आपको समझ में आएगा.
अब ये डायग्राम क्या बता रहा है कि भाई ऐसा एक टिपिकल सिनेरियो लेते हैं, आई बीइंग फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजीज। तो टिपिकल एजुकेशनल सेटअप अगर देखोगे तो आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक रहेगा, उसमें वो बंदे बैठे हैं, कोई रजिस्ट्रार बन के बैठा है वो, ओके। फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट है जो अकाउंट्स रिलेटेड सैलरी एंड फीस करेक्शन एंड ब्ला ब्ला ये सब कुछ देखता है। एंड देयर आर लॉट मेनी, एग्जाम सेल होता है, लाइब्रेरी होती है, डिपार्टमेंट के भी ऑफिसेस होते हैं, बहुत सारे। तो फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच का मतलब क्या है कि हर एक एप्लीकेशन एक इंडिपेंडेंट है, वो एप्लीकेशन के दूसरे एप्लीकेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। भले वो दो अलग एप्लीकेशन एक ही कॉर्पोरेट को और या ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, तो उस वक्त डेवलपमेंट ऐसा हुआ करता था। तो जैसा कि रजिस्ट्रार, लेट अस अज्यूम दैट आई विल टेक यू टू दोज ओल्ड डेज एंड प्लीज बी विथ मी, टेक इट इन द राइट स्पिरिट। ऐसा सोचो कि ऑटोमेशन हुआ ही नहीं था, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते, कॉलेज की बात करते, ऑटोमेशन हुआ नहीं था। ऑटोमेशन मींस कंप्यूटराइजेशन हुआ नहीं था। और फिर उनको जो डिसीजन मेकर्स है, जो हायर अथॉरिटी, उनको लगा यार नहीं, अभी रिलाइंग ऑन मैनुअल वर्क possibly is not good for health, and it leads to lot many human errors and a lot of time basically, okay, needs to be spent. तो ऐसा सोचा कि चलो अभी कंप्यूटराइजेशन ऑटोमेशन करते हैं। तो किसी भी ऑटोमेशन प्रोसेस में एक टीम बनती है, और ये तो सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो टीम बनती है और फिर वो टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि लेट अस अज्यूम दैट कि रजिस्ट्रार ऑफिस का जो भी कामकाज जो मैन्युअली होता है उसको अभी हमें कंप्यूटराइजेशन करना है, ओके, वी नीड टू ऑटोमेट दैट। तो बंदे आके फिर बैठेंगे, इंटरव्यू लेंगे, try to understand how exactly the registrar office work. So they will note down something, they will understand that this type of data is required by register office, and then they will apply their own experience, because ये जो बंदे वो एप्लीकेशन वाले बंदे प्रोग्रामर्स है, कोडर्स है बेसिकली। So they will use their experience and will decide कि यार ये काम के लिए ना ये डेटा ये फाइल में डालेंगे। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि पॉसिबली दे में सेटल डाउन सेइंग दैट एक एम्प्लॉय डेटा के लिए अलग फाइल बनाएंगे। आपको दिखाई दे रहा है उधर डायग्राम में, एक स्टूडेंट डेटा के लिए अलग फाइल बनेगी, कोर्स डेटा के लिए अलग फाइल बनेगी, रजिस्ट्रेशन जो भी कर रहा है उसकी अलग फाइल बनेगी, ब्ला ब्ला। And then these guys will start doing the software development, and then they will try to automate all the processes, operations जो रजिस्टर ऑफिस करता है। और फिर बाद में टेस्टिंग होगा, रिगोरस टेस्टिंग भी होता है डिप्लॉयमेंट के पहले। फिर एक बार सब कुछ चंगे अगर नजर आता है तो बोलते हैं चलो अभी इसको डिप्लॉय करते हैं, मींस अभी उसके हाथ में देते हैं, अभी तू रजिस्टर ऑफिस तुम शुरू करो इसको यूज करने का। तो ये एक प्रोसेस बनी हुआ करती थी रादर। तो फिर then realizing that okay yaar great, this is bringing lot of benefits, automation obviously brings lot of benefits, human errors gets eliminated, and then okay we save upon lot of time and typical very repetitive process, the person will not engage his mind in that, will get into some creativity या creative activity. So realize किया कि accounts department को भी automate करते हैं। Are you getting this scenario? अनलाइक ये तो नहीं। तो ये सिनेरियो में फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी ऑटोमेट करना है। फिर ये बंदे आ गए, अब ये दोज हु डेवलप रजिस्टर ऑफिस एप्लीकेशन नीड नॉट बी डेवलपिंग द सेम अकाउंट्स डिपार्टमेंट एप्लीकेशन। आर यू ओके विद दिस? दे मे बी डिफरेंट पर्सन, बट देन फाइनली द प्रोसेस रिमेन्स सेम। दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्लो, द वर्क फ्लो बेसिकली ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, and then they will settle down saying that यार अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी एम्प्लॉय का डेटा सैलरी रिलेटेड लगता है, स्टूडेंट डेटा लगेगा, ट्यूशन फीस डेटा, फाइनेंशियल दिस एंड दैट। दे विल सेटल डाउन कि दिस मेनी फाइल्स वी विल यूज, एंड ये फाइल में ये रहेगा, उसका फॉर्मेट भी डिसाइड किया जाएगा कि पहला कॉलम जो फाइल में आएगा उसका मतलब है रोल नंबर, दूसरा कॉलम नाम, एंड ब्ला ब्ला। आर यू गेटिंग दिस टिल दिस पॉइंट? एंड दे विल डेवलप। एंड नाउ what you should sense is that what I'm trying to convince you is that in traditional approach, file processing approach, every application is treated as independent application, अलग अलग है, integrated नहीं है। तो ये integrated नहीं है, इसलिए इसके drawbacks आ गए। अभी वो drawbacks क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं।
तो पहला ड्रॉबैक तो आप यू कैन बेसिकली ओके जस्ट लुकिंग एट दिस स्लाइड यू कैन मेक आउट कि यार उधर भी एम्प्लॉय डेटा लगेगा, इधर भी एम्प्लॉय डेटा लगेगा, शायद उसकी जो रिक्वायरमेंट है रजिस्टर ऑफिस की, उसको जो फॉर्मेट में डेटा लगता है स्टूडेंट का या एम्प्लॉय का, उस सिमिलर फॉर्मेट में शायद अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ना लगे, उसको कुछ अलग फॉर्मेट चाहिए, लेकिन डेटा तो रिप्लिकेट हो रहा है. एंड दिस रिप्लिकेशन ऑफ डेटा लीड्स टू वन पोटेंशियल ड्रॉबैक व्हाट दे यूज टू face experience, and I believe you people by this time knows these drawbacks, potential drawbacks. And the first drawback normally, and it is the same illustration, same ही बात हो रही है, every application is independent, हर एक application के कुछ files है और ये यूजर वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज करके उस पे ऑपरेशन करेंगे और ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स है. आर यू ओके विद दिस? तो ये जो डिसएडवांटेजेस जो रहे, पहला डिसएडवांटेज विच वी कैन इमीडिएटली मेक आउट इज रिडंडेंसी. डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या है कि इफ द सेम पीस ऑफ डेटा इज रिप्लिकेटेड इन मेनी फाइल्स एट डिफरेंट पोजीशंस फ्रॉम स्टोरेज पर्सपेक्टिव, that will lead to an redundancy. Yes or no? And what is wrong in having redundancy? You tell me. Can you just tell me what is wrong in having redundancy? Wastage of memory. Great. So in those days, try to visualize the scenario. Believe me, 1970s, memory was luxurious and very expensive in those days. Okay. So you will not believe, we used to have the systems which normally used to have something like 128 MB RAM. 128 MB RAM. Okay, 100 MB ka hard disk. And now, my dear friends, you tell me what minimum size RAM you expect, and you will never compromise below that, even if it comes to your cell phone. Tell me. 8 GB minimum. I'm talking about the main memory RAM. Yes or no? And then hard disk, if I talk about, nothing below what? Terabytes, 1 TB and so on and so forth. So rightly pointed out, it leads to an wastage of memory. And the more serious consequences क्या थे कि यार ये redundancy की वजह से redundancy always basically leads to something called as an inconsistency. अच्छा, inconsistency का मतलब क्या है कि यार एक जगह एक फाइल में देखा तो कुछ उस चीज का जो डेटा है ना वो कुछ अलग दिखाई दे रहा है, दूसरे फाइल में देखा तो कुछ अलग पिक्चर दिखाई दे रहा है. This is called as an inconsistency. So for example, if register office says that the faculty has been promoted to an higher cadre, so is entitled to get a higher salary, and this information is not communicated to the accounts department, so what is likely to happen? Accounts department still will assume that the employee is working on the same previous grade, that position, and then finally at the end of the month will calculate the salary on the basis of some previous basics and HRA and DA, whatever the salary components are. So this is one simple example of an inconsistency I'm talking about. What you need to visualize looking at this example is same piece of information but recorded at different places no longer agrees with each other, and this leads to a serious problem. So they realize this as a potential drawback. I am not saying that this always used to be there in those days. No, potential drawback means agar humne ढिलाई या if we get into a bit of ignorance, this problem is likely to rather used to trouble them. If you take utmost care, then obviously they used to get rid of this problem, but then this will never happen with everyone, right? So potential drawback. One more drawback is difficulty in accessing the data. डिफिकल्टी इन डेटा पड़ा है फाइल में और मेरे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम पड़ा है, अभी ये डिफिकल्टी कहां से आ गई? तो ये डिफिकल्टी इसलिए आती है माय डियर फ्रेंड्स, द रीजन इज दैट कि जब एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है तो जो बंदे हैं ना
जो डेवलपर्स है वो बंदे तो will try to interact with the actual workforce, will try to understand कि उनको उनका expectation क्या है, and they will provide all the functionalities based on that entire discussion and brainstorming session. लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि one can anticipate every possible query which will arise in a future. मीन्स आगे मुझसे क्या पूछा जाएगा ये मैं आज यहां बैठ के मेरे लिए बताना मुश्किल है, सब कुछ बताना मुश्किल है. तो एंटीसिपेशन एवरीथिंग, एंटीसिपेशन ऑफ एवरी पॉसिबल क्वेरीज इज रियली डिफिकल्ट. तो उस दौर में यही होता था. फिर लेट अस अज्यूम दैट ये जो एप्लीकेशन बने हैं ना, ये जो एप्लीकेशन है, जो प्रोग्राम्स बने, इसमें फॉर एग्जांपल अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक ऐसी फैसिलिटी है कि आप एम्प्लॉय कोड एंटर करो तो आपको पता चलेगा उसके सारे डिटेल्स. अगर आपने एम्प्लॉय का नाम एंटर किया तो आपको बताएगा कि ये नाम के इतने सारे एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एंड सो एंड सो फोर्थ. लेकिन ऐसा सोचो कि हायर मैनेजमेंट बोलता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन दोज who are drawing a salary above 1 lakh rupees. Let us assume that ये एक spur of the moment query आ गई, कुछ for some reason higher management ये जानकारी चाहिए. अभी assume करो कि ये support तुम्हारे एप्लीकेशन में नहीं है, ये बंदे ने अपने एंटिसिपेट किया ही नहीं था ये क्वेरी, तो प्लीज तो कैसा हैंडल करना पड़ेगा, यू टेल मी. मींस इट इज as simple as like this. If I assume that this example I need not again provide you, not required rather. ऐसा सोचो कि आपको एक बोला गया, जो वेरी कॉमन प्रोग्राम आई फाइंड इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, आपको बोला जाता है कि राइट अ प्रोग्राम, बी लैंग्वेज डजंट मैटर्स, सी लैंग्वेज, जावा, व्हाटएवर, राइट अ प्रोग्राम टू सिमुलेट बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेटर. याद आ रहा है कुछ किया है? कौन से ऑप्शंस देते हो अपन तिथे? विच ऑल ऑप्शंस? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये करते हैं स्विच केस वगैरह यूज करके, राइट? अभी ऐसा सोचो कि यार ये बंदा जो अभी आपने प्रोग्राम लिखा और फिर आपके दोस्त को बोला अभी चल रन कर, तेरे सारे बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन मेरा प्रोग्राम करके बताएगा. और ये बंदा जो अभी यूज करने वाला है बोलता है मुझे तो रिमाइंडर देखना है, रिमाइंडर कैलकुलेट करना है. वो मॉड्यूलस ऑपरेटर है अपने इसमें, लेकिन ये एंटीसिपेट नहीं किया था. मैंने जो प्रोग्राम लिखा मैंने तो 4 ही ऑप्शन के बारे में सोचे. अभी क्या है, मैं मुझे बताइए अभी क्या कैसा हैंडल करेंगे सिचुएशन को? मींस प्रोग्राम कोडिंग करना पड़ेगा. एंड बिलीव मी, जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस होते हैं ना, उसको मॉडिफाई करना इज मोर कॉस्टलियर, ऐसा कहते हैं, देन समवन गिवन अ चॉइस कि ये एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, इसका फंक्शनैलिटी, और दूसरा इसको छोड़ दे, इससे अच्छा बेहतर बना. तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड लोग बोलेंगे सेकंड ऑप्शन अपीयर्स टू बी बेटर, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन एंड वेदर द डॉक्यूमेंटेशन इज देयर और नॉट, ये ट्रबल होता था. तो what I'm trying to tell you is that this potential drawback is difficulty in accessing data. तो spur of the moment एक आधी क्वेरी आती है और उसके लिए अपने एप्लीकेशन में सपोर्ट ही नहीं है, तो ये सिचुएशन है कि डेटा तो पड़ा है लेकिन उसको एक्सेस करना मुश्किल हो रहा है. Got the point? तो ये सिचुएशन को डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा कहा जाता है. ओके, दिस इज अ वेरी, ये ड्रॉबैक्स थोड़ा सा आप कॉमन सेंस पे भी देखेंगे ना, तोलेंगे तो आपको दिखा लगेगा कि अरे यार ये सही बात है. फिर दूसरा एक ड्रॉबैक की बात होती है, डेटा आइसोलेशन की बात होती है. और डेटा आइसोलेशन का मतलब कभी भी एक, अगर मैं नया एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, जैसा लेट अस अज्यूम दैट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, I'll be using this accounting and finance application already बना है, human resources already बना है, and let us that now we are about to develop sales and marketing kind of an application. और फिर ये सेल्स एंड मार्केटिंग काइंड ऑफ एप्लीकेशन को जो डेटा लगता है ऑलरेडी पड़ा है उन फाइल्स में जो नॉर्मली ओके यूज किए जा रहे हैं अपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में. डेटा जो चाहिए वो पड़ा है लेकिन अलग एप्लीकेशन के फाइल्स में पड़ा है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीन ऐसा है कि द वे द डेटा हैज बीन फॉर्मेटेड फॉर द फाइल्स इन द फाइल्स pertaining to other applications is not what I'm expecting. I am looking for some different format. Got the point? So मेरे लिए from new application point of view, data is there but appears to be of no use for me, and that
is called as data isolation. So what is an only option left now for these guys, those who are supposed to develop this new application? Tell me. They will अपना फाइल वापस बनाएंगे और वापस वो डेटा को पॉपुलेट करना पड़ेगा, पंच करना पड़ेगा, पॉपुलेट करना पड़ेगा, डेटा एंट्री करनी पड़ेगी. Are you getting this? So this invites a lot of human errors, efforts, and it's not good. And further, it will again lead to an redundancy, and redundancy is an invitation given to an inconsistency. Now these are some of the problems. You have some query? Acha. So which you are expecting? First year. So no, sir. But then it's value addition for you. This is for happening for second year. Thank you. Hey, thank you, yeah, thank you. Hey, thank you. नाही यार असं काही नाही ते फर्स्ट इयर मधलेच असतील ते कंटाळले आणि आहे का सो आय डोंट नो यार चलो ठीक आहे इट हॅपन्स सो so are you okay Can with you this? please explain data isolation? Data isolation, thank you very much. Okay, so remote location query. So data isolation, what I mean is that कि ये ऐसा सोचो कि रजिस्टर ऑफिस का एक एप्लीकेशन ऑलरेडी बना है. गॉट द पॉइंट? ये एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन जो है उसके अपने कुछ फाइल्स है, एम्प्लॉय डेटा, स्टूडेंट फाइल, कोर्स फाइल, रजिस्ट्रेशन फाइल, ऐसे कुछ फाइल्स है जो यूज किए जा रहे बाय रजिस्टर ऑफिस का जो एक एकेडमिक एप्लीकेशन की बात हो रही है. अभी ऐसा सोचो कि एक नया एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए, और ये जो बंदे डेवलप कर रहे हैं नए अकाउंट, ये नया एप्लीकेशन, अकाउंट्स एप्लीकेशन, उन्होंने रियलाइज किया कि यार मुझे जो डेटा चाहिए वो डेटा ऑलरेडी पड़ा है उन फाइल्स में जो जिनका रिश्ता एकेडमिक एप्लीकेशन के साथ जुड़ा है. टिल दिस पॉइंट आर यू ओके? Yes, sir. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट इन द फॉर्मेट व्हाट आई वांट माय डेटा टू बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू. तो जो फॉर्मेट में मुझे वो डेटा चाहिए वो फॉर्मेट में उधर नहीं है. तो डेटा तो है लेकिन जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं है. तो ये जो टिपिकल सिचुएशन है इसे ही डेटा आइसोलेशन कहा जाता है कि द डेटा इज देयर बट देन अपीयर्स टू बी आइसोलेटेड एंड आई कैन नॉट टच इट, एक्सेस इट. So for me it is basically isolated. Got the point? Yes, sir. So, thank you. So these are few drawbacks, and then you always can enjoy the freedom for raising your concerns and queries, no problem. My dear friend, going ahead, and there are some more potential drawbacks, and then one is called as an integrity problem. Integrity, at least at this level, we just have started, okay, half an hour. Integrity का मतलब है डिग्री ऑफ करेक्टनेस. क्या कहा मैंने? हाँ, डिग्री ऑफ करेक्टनेस इज बेसिकली इंटीग्रिटी. ऐसा सोच के चलते हैं. अभी ये डिग्री ऑफ करेक्टनेस इज वेरी वेरी रिलेटिव टर्मिनोलॉजी. रीजन आई विल टेल यू. क्या करेक्ट है, ये क्या रॉन्ग है, ये बेसिकली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. मींस not always, but then logically I can say, for example, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ये एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल मैं नॉर्मली कोशिश करता हूं सामने रखने की. यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का अभी एंड सेमेस्टर एग्जाम होता है. कितने मार्क्स का होता है? 80 मार्क्स. निगेटिव मार्किंग सिस्टम है क्या? नहीं है. तो the least marks will be 0 and the highest possible marks someone can score 80. So valid range is nothing but 0 to 80. Anything okay not fitting into this range is invalid. So when the punching of data is happening, let us assume that okay your paper gets evaluated, assessment हो गया, फिर वो जो marks आते हैं typically, okay, someone is made responsible for doing the data entry. So if someone enters, okay, 120 as the marks scored by one student in one particular course, is it not you feel your system should immediately respond saying that this is invalid and should not accept? So this
input validation is very much required. Yes or no? So to maintain the integrity of system, input validation की बहुत जरूरत होती है, क्या सही है क्या नहीं है, ये acceptable है या नहीं है, something like that. अच्छा, in the simplest form, looking at your experience, क्योंकि तुमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काफी की है, तो इंटीग्रिटी, ये जो वैलिडेशन चेक हम लोग डालते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग वैलिडेशन चेक कैसा डालते हैं, इफ एल्स में डालेंगे ना. अगर ये रेंज, ये जो वैल्यू मुझे मिली है वो ये रेंज में अगर है तो चंगे है, आगे बढ़ते, नहीं तो इसको एरर, या तो जावा अगर किया होगा तो यू विल थ्रो एन एक्सेप्शन, समथिंग लाइक दिस. यस और नो? अच्छा, ये क्या परमानेंट है क्या, ये मार्क्स कि एक बार लिख दिया तो जनरेशन अक्रॉस जनरेशन? नो, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. टुमारो वी डोंट नो, नेगेटिव मार्किंग स्कीम में कम. यस और नो? सो ये अगर चेंज लाना है तो व्हाट यू नीड टू चेंज, देन इन दैट केस you'll be changing your program. So integrity constraints जो है, constraint is putting limitation to ensure. constraint का मतलब मैंने क्या बताया, आप limitation डालो, डालना ही पड़ेगा भाई, कि 0 के नीचे नहीं जा सकते ना 80 के ऊपर जा सकते, ये limitation ही हो गया. इसको constraint कहा जाता है, limitation कहा जाता है. Are you okay with this? तो integrity constraint implement करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर में, आपके एप्लीकेशन में ही कोडिंग करना पड़ेगा. दे नीड टू बी कोडेड, हार्ड कोडेड. सो अगर ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का दायरा अगर चेंज होता है, क्राइटेरिया चेंज होता है, तो यू नीड टू अगेन रीडू दिस. यू नीड टू मॉडिफाई योर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन विच इज नॉट गुड. सो दे रियलाइज दैट यार, ये जब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट चेंज होते हैं तो वी नीड टू गो इनटू प्रोग्राम एंड डू द चेंजेस विच इज नॉट एट ऑल गुड. एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग दिस पोटेंशियल ड्रॉबैक एज इंटीग्रिटी प्रॉब्लम. आर यू ओके माय डियर फ्रेंड्स? आर यू गेटिंग दिस? Those who are on online, are you okay with this? Yes. Okay. So this is integrity, and then similarly we have an atomicity problem. Atomicity is atomicity from database or any transaction is a kind of scenario. अगर होगा तो पूरा होगा, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं होगा, आधा अधूरा नहीं जमेगा, is basically what transaction always will believe. So if you do any and this is very important, especially when it is important for every possible transaction irrespective of its nature. But then you can make out if at all you are relating this with the financial transaction. So होगा तो पूरा होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा. कि you are transferring a fund from, again this is very common example, my dear friends, be with me. आपको फंड ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट. तो आपने अगर 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए, ओके, 1 लाख you are transferring basically, okay, from your account to someone, your friend's account. So if the transaction gets over, so now your account should get debited by 1 lakh and your friend's account should get credited by 1 lakh. Yes or no? तो इसको होगा तो पूरा होगा, नहीं तो अच्छा, अगर ट्रांजेक्शन फेलियर आ गया तो व्हाट यू एक्सपेक्ट द स्टेटस? मींस मेरे पास जो बैलेंस था वैसा ही रहना चाहिए और उसका जो बैलेंस है वो वैसा ही रहना चाहिए. मींस ये टोटल दोनों का सेम होना चाहिए. ये सुनो, तो ये इसे कहते हैं ऑल और नन रिक्वायरमेंट. एक तो होना चाहिए तो पूरा होना चाहिए, नहीं तो आधा अधूरा नहीं जमेगा. इज एन ऑटोमेसिटी. और अगर ये इसको हैंडलिंग अगर नहीं किया गया, इसको स्पेशल मेजर नहीं लिए गए, और वो दौर में ये स्पेशल मेजर थोड़े से इग्नोर हुआ करते थे एप्लीकेशंस डेवलपमेंट में, क्योंकि काफी इट ऑलवेज कम्स विद लॉट ऑफ टैक्सिंग, इट डिमांड्स लॉट ऑफ एफर्ट्स आल्सो. तो ये अगर केयर नहीं ली गई तो देयर एग्जिस्ट एवरी चांस कि अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है मींस एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो बीच में कुछ इंटरप्ट आ गया या फेलियर आ गया या कुछ गलत हो गया, फॉर एग्जांपल समथिंग गोज रॉन्ग, तो शायद ऐसा हो सकता है. और दे यूज्ड टू फेस दिस डिफिकल्टी एंड दे यूज्ड टू एक्सपीरियंस दिस इन दोज डेज कि यार आधा अधूरा ट्रांजैक्शन भी स्टेटस वैसा ही रहा. सो तूने जो कहा था ना कि इट शुड गेट रिवर्टेड बैक, सो दे यूज्ड टू एक्सपेक्ट दैट अरे ऐसा तो नहीं हो रहा है. सो that normally used to lead to a disaster, okay, many a times in financial institutions at least. So they used to call this as an atomicity problem, atomicity anomaly. There are different words. Atomicity problem we should call it as. तो अभी तक जो बात चली मैं वापस reiterate करता हूं. एक ट्रेडिशनल एक तरीका
जो एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डेटा को मैनेज करने का जो हुआ करता था, उस पर हमारी बात हुई है। मैंने कहा कि ट्रेडिशनल अप्रोच, कन्वेंशनल अप्रोच ऐसा था कि फाइल में डेटा जाता था और हर एक एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन हुआ करता था और हर एक एप्लीकेशन के अपने अपने फाइल्स होते थे और उन वो एप्लीकेशन को जो डेटा चाहिए वो फाइल्स में हुआ करता था। और इस नेचर की वजह से कुछ ड्रॉबैक्स देखे गए, जैसा पहला ड्रॉबैक रिडंडेंसी, मेमोरी वेस्टेज होता है। उससे भी सीरियस ड्रॉबैक कि वही डेटा अगर अलग अलग चीज अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड हुआ है तो यहाँ मॉडिफाई किया है तो वहां भी मॉडिफाई करना जरूरी है। अगर वो नहीं है, टाइम गैप आ गया तो वो कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, विच इज नॉट गुड। इसे इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है। फिर हमने बात की आइसोलेशन की कि नया एप्लीकेशन डेवलप करना है और मुझे जो डेटा चाहिए वो ऑलरेडी पड़ा है वो फाइल में, लेकिन अलग फाइल्स जो है दूसरे एप्लीकेशन को बिलोंग करते हैं। तो अरे यार वो डेटा तो है लेकिन मुझे जिस तरह से चाहिए, जिस तरीके से चाहिए उस फॉर्म में नहीं है, फॉर्मेट में नहीं है, तो चलो मैं वापस उसको पंच करता हूँ, वापस मेरी मेरी खुद की फाइल बनाता हूँ। तो ये जो है उसे डेटा आइसोलेशन कहा जाता है। डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग की बात चली कि कुछ अगर क्वेरीज ऑल ऑफ अ सडन आ जाती है, इन स्पर ऑफ द मोमेंट क्वेरीज कहा जाता है, अचानक आलेल्या क्वेरीज आहेत या एकदम से आ गए क्वेरीज। तो ऐसे सारे क्वेरीज अगर आते हैं और उसके लिए एप्लीकेशन में सपोर्ट नहीं है तो तुम्हारे पास कोई नहीं, एक तो मैनुअल करो, छानबीन करो डेटा की और खोजो, तो विच इज ऑल्सो नॉट गुड। तो इसे जनरली डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा ऐसा एक हम लोग कहते हैं। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स की बात चली कि यार कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट डिग्री ऑफ करेक्टनेस इंश्योर करने के लिए, और वो जो दायरा है करेक्टनेस का वेरी रिलेटिव है, कभी चेंज होता है तो मुझे फिर एप्लीकेशन में जाके चेंज करना पड़ेगा, विच इज नॉट गुड, इनवाइट्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। और अभी जो हमारी बात हुई ऑटोमेसिटी पे चली कि एक तो पूरा होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए ऐसा, और अगर केयर नहीं ली जाती है तो आधा अधूरा भी हो सकता है, और ये आधा अधूरा इज नॉट गुड। Yes or no? Even in a very philosophical manner also, if you look at this, you will find that adha adhura is not good. Okay, तो पूरा नहीं तो बिल्कुल नहीं। Yes or no? So these are some of the problems. और फिर concurrent access anomalies की जो बात चलती है, तो जावा में आपने I'm just wondering, लक्षात आहे तर वेल एंड गुड, अदरवाइज छोड़ दो। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन या थ्रेड्स आपने देखा, मल्टी थ्रेडिंग देखा, तो क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग? थ्रेड इज अ स्मॉल कोड विथ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मल्टीपल थ्रेड्स को हम लोग छोड़ सकते हैं। सो मल्टीपल थ्रेड्स का प्रोसेसिंग जब होता है तो उसे मल्टी थ्रेडिंग कहा जाता है। और सिनेरियो ऐसा है माय डियर फ्रेंड, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा आई विल टेक योर टाइम, कि जनरली कैसा होता है कि सिस्टम में ना दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसर्स की बात करते हैं हम लोग, दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसर्स। एक होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग, मेन प्रोसेसिंग उसका काम है। दूसरा जो होता है ना, वो नॉर्मली आपको ये कोर्स हुआ है या नहीं हुआ है पता नहीं, माइक्रो प्रोसेसर या सीओ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर भी आपने किया है पिछले सेमेस्टर, तो थोड़ा बहुत शायद आपको। दूसरा प्रोसेसर आईओपी कहा जाता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो आईओपी का काम, अगर एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आईओपी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर को अगर पूछा जाएगा, भाई तू बता तेरा काम क्या है, बोलेगा यार इनपुट आउटपुट वाले जो भी एक्टिविटीज है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल कंट्रोल एंड आई विल लुक आफ्टर दैट। सीपीयू को पूछेंगे तेरा काम क्या बता, वो बोलेगा वो मेन कॉम्पिटिशनल जो खेल है ना, नंबर क्रंचिंग का, क्योंकि फाइनली तो एट द लोवेस्ट लेवल सारा खेल वंस एंड जीरोस का ही है, वो सारा खेल मैं करता हूँ। और इनपुट आउटपुट कौन करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटने का काम हो रहा है। तो ऐसा है, अभी आप एक प्रोग्राम लोगे, एक किसी भी प्रोग्राम का एक टेन्योर देखोगे, एक प्रोग्राम है, व्हाट इज प्रोग्राम, टेल मी, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ एन प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सुनो, तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज अ प्रोग्राम। हाँ, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, अरे यार, हाँ, इंस्ट्रक्शंस जो है, इंस्ट्रक्शन जनरली हम लोग कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन वेरी सीपीयू बाउंड और
और ये कॉमन सेंस है माय डियर फ्रेंड। क्या मतलब है बताओ, सीपीयू बाउंड का मतलब क्या है? कॉमन सेंस बताइए। ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसको किसका अटेंशन लगेगा? सीपीयू। The instruction which needs to be executed and taken care by CPU is a CPU bound instruction. And now in the similar spirit, if I ask you what is IO bound instruction, the one which requires an attention of an IO processor, something like that. So now your instruction either will be CPU bound or IO bound. तो मुझे बताओ कि एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो एक इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो रहा है, ये एक इंस्ट्रक्शन ऐसे इंस्ट्रक्शन। तो जब पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, लेट अस assume that it is CPU bound, तो is it not IO processor is sitting idle? बरोबर है, उसके पास काम ही नहीं है। उसके बाद वाला वापस CPU बाउंड इंस्ट्रक्शन आ गया, तो who is busy and who is idle? CPU is busy, IO processor is idle. फिर बाद में IO बाउंड इंस्ट्रक्शन आ गया, तो CPU will remain idle and हाँ, थोड़ा मींस नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स, बट आई एम जस्ट स्लाइटली सुपरफिशियली आई एम टेलिंग। इसका मतलब है ये दो जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस, उनको आइडल रखना इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। तो अपन खाली दिमाग ऐसा कहते हैं ना, किसी भी रिसोर्स को यूज नहीं करना मींस उसका अंडर यूटिलाइजेशन होता है। तो वही स्टोरी है यार, आइडल रह रहा है, यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो ये यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए कंसेप्ट आ गया कॉन्करेंसी का। मल्टी थ्रेडिंग इज कॉन्करेंसी, कि तू एक काम कर, एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मत बोल, तू मल्टीपल प्रोग्राम छोड़ना। और मल्टीपल प्रोग्राम में ओवरलैप ऐसा आना चाहिए कि जब सीपीयू पहले प्रोग्राम का सीपीयू बाउंड इंस्ट्रक्शन के साथ खेल रहा है, तो एटलीस्ट दूसरा एक प्रोग्राम ऐसा रहे जिसको आईओ प्रोसेसर का अटेंशन लगे। तो एटलीस्ट आईओ प्रोसेसर उस वक्त आईओ प्रोसेसर के आईओ बाउंड इंस्ट्रक्शन के साथ खेलेगा, तो दोनों भी प्रोसेसर्स अपने आइडल नहीं रहेंगे, बिजी रहेंगे। सो दिस विल इंप्रूव और यूटिलाइजेशन। तो ये जब कॉन्करेंसी की बात चलती है, कॉन्करेंसी की, तो कॉन्करेंसी सोचा और हमने किया क्या ऐसा होता नहीं है, उसमें थोड़े से यू नीड टू टेक अ केयर। एंड इफ यू रिमेंबर, आपने जो थ्रेड किया है, मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन ऐसा आपने कभी सुना है क्या? क्योंकि ये सेमेस्टर काफी मेरे ख्याल से कॉम्पैक्ट था, या पता नहीं, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन किया है क्या? थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ही, आई जस्ट ट्राई टू concurrent access this room as a resource. This classroom is a resource. The faculty is aspirant, उसको यहाँ आके पढ़ाना है, समझा? अभी थ्रेड है, ऐसा सोचो, और एक फैकल्टी है, उसको भी यहीं आके पढ़ाना है। एक साथ पढ़ा सकते हैं क्या? It will lead to an chaos. Yes or no? So someone is supposed to look after this synchronization. की मला सांगेल तो सचिन तुझा मध्ये थोडा वेळ तू शिको, ओके? when your slot is over, तो एक काम कर, तू कोई डिस्टर्ब ना करे तो तू ताला ही मार दे, तो कोई आएगा ही नहीं। तो तेरा काम होने के बाद में तू ताला खोल, फिर दूसरा जो थ्रेड बैठा है दरवाजे के बाहर, वो बोलेगा अभी तेरा काम हो गया ना, तो मैं जाता हूँ। तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, आप ऐसा ही देखोगे। तो ये जो लॉजिकली मैं बता रहा हूं ना, तो इसे कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज, ये अगर प्रॉपरली नहीं किया गया तो दैट विल लीड टू सम एबनॉर्मलिटीज। एंड एनोमली इज नथिंग बट एन एबनॉर्मलिटी। एनोमली का अर्थ क्या है? एबनॉर्मलिटी मींस जनरली हम लोग कहते हैं कि मैं और मेरा दोस्त जॉइंट अकाउंट होल्डर है। इसका मतलब दोनों भी ऑपरेट कर सकते हैं अकाउंट को, और मैं और मेरे दोस्त ने उस अकाउंट को डेबिट करने की, पैसा निकालने की कोशिश की, कोइंसिडेंटली एक ही टाइम पे, लेकिन अलग अलग एटीएम से। समझा? तो ये अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया तो इसमें एक चांस ऐसा बनता है कि सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और दूसरी रिक्वेस्ट रिफ्लेक्ट हो नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, क्यों? मैं जब देख रहा हूं मेरा अकाउंट, मुझे वहां 10 लाख रुपए दिखाई दे रहे, ओके, और फिर मैंने तुरंत रिक्वेस्ट डाल दी 9.5 लाख रुपए मुझे निकालना। उसी वक्त मेरे दोस्त ने भी देखी,
उसको भी 10 लाख रुपए दिखाई दिया, कि मेरा तो ट्रांजेक्शन अभी इन अ वे है, उसको भी 10 लाख, उसने भी 5 लाख की डाल दी, एंड उसका रिक्वेस्ट रीच होने तक, लेट्स अज्यूम दैट सिनेरियो, देखो मींस कि मेरा ग्रीन ओके सिग्नल आ गया, उसका भी बेसिक बैलेंस 10 लाख था, उसको भी ग्रीन सिग्नल आ गया, तो इज इट नॉट वी टुगेदर विल गेट बेनिफिटेड, एंड दिस विल बी अ डिजास्टर फॉर एन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन? So this is one very logical, on a logical front, in a right spirit, my dear friends, you please take this example. तो ऐसा होने का चांस होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को क्या कहा जाता है बताइए? कॉन्करेंट एक्सेस। अगर कॉन्करेंटली एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है, ये रिसोर्स है, क्लासरूम है, दो बंदे एक साथ ही घुस रहे इसमें, तो कॉन्करेंट जिनको पढ़ाना है, तो ये कॉन्करेंट एक्सेस अगर करने की कोशिश होती है तो एबनॉर्मेलिटीज आने के चांस बनता है, तो कुछ मैनेजमेंट लगेगा उसमें टू हैंडल दिस, एंड दैट वाज मिसिंग इन दोज डेज, सो दैट ड्रॉबैक, पोटेंशियल ड्रॉबैक, इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट एक्सेस एनोमली. Okay, and finally coming to security problems. So security problem, in those days security was not very severe concern, and today it is the utmost concern, you people know, because the whole world now is basically, okay, doing everything online, and uh, all sort of transactions are happening. So security का मतलब एकदम मिनिमल लेवल पे भी अगर हम लोग देखते हैं, तो ऑथराइजेशन, ऑथेंटिसिटी की बात चलती है, इंटीग्रिटी की बात चलती है, कि भाई तुझे अगर सवाल रहा कि तुझे अलाउड है एक्सेस या नहीं है, तो तू तो एक वैलिड यूजर होना चाहिए, तेरा ऑथेंटिकेशन भी होना चाहिए, ये सुनो, तेरे पास ऑथराइजेशन होना चाहिए कि ये ऑपरेशन मैं कर पाऊं, ये नहीं कर पाऊं, तो ये भी जानकारी कहीं ना कहीं हमें रिकॉर्ड करके रखनी पड़ेगी, सो दैट जब भी कोई आता है, नया बंदा रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेगा, एंड इफ इज नॉट रियली स्पीकिंग, ओके, वैलिड यूजर, ऑथराइज यूजर, तो मेरा सिस्टम उसको बोले कि भाई तुझे एक्सेस डिनाइड है। तो ये सब करने के लिए काफी एफर्ट्स होते थे, और इसलिए उस दौर में काफी डिफिकल्ट था, इसलिए उसे सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम वाला भी एक पोटेंशियल ड्रॉबैक देखा गया। सो ये चंद थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स पे मैंने बात की ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पे। तो व्हाट नाउ आई वुड लाइक टू पिच इज कि मैं अभी कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की कि भाई ये सारे ड्रॉबैक्स थे, तो जरूर सोचा ही गया होगा ना कि यार इसको तो अभी कुछ तो करके निपटाना पड़ेगा। तो दिस ड्रॉबैक्स, रियली स्पीकिंग, दे हैव प्रॉम्प्टेड द डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट कॉल्ड एज एन DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, काफी कॉमन सवाल पूछा जाता है इस पे कि व्हाट इज ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच, एंड लिस्ट आउट एंड एक्सप्लेन द ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच। काफी कॉमन क्वेश्चन है, तो ये सारा आपको ये करना है, एंड आई विल बी शेयरिंग द PDF ऑफ दिस, ओके, एंड today, because this is the very first session, I will not be writing down too many things, but then there are topics from second topic, actually we'll be getting into the design part. उसके बाद में टॉपिक, थर्ड टॉपिक और फोर्थ टॉपिक तो पूरा क्वेरीज है, और आपके जनरेशन ने तो आपने मिनी प्रोजेक्ट्स भी किए, तो SQL वगैरह, ओके, सिक्वल, ये सब आपको थोड़ा बहुत पता होगा, तो उसमें हमें जाना है, तो एक्सप्लेन करता रहूंगा मैं, और ऐसा सारा अपना डिस्कशन चलता रहेगा। तो आज मी कभी वापरतो हे सगळं, इफ यू आर ओके, इफ यू फील कंफर्टेबल, बिकॉज ओके, एक स्पैन होता है ना, हर एक एंगेजमेंट का स्पैन होता है, so these are you okay with these drawbacks? So what I'll do is that I'll take a pause of 5 minutes, you please relax, आणि माझं सेशन असंच राहणार आहे. I don't prefer to stretch my session for the entire 2.5 hours, so that I believe, had it been a case I sitting in your position, it's really difficult. ओके, सो अटेन्शन स्पॅन होता, तर 5-10 मिनिटं, मी 5 मिनिटं आपण थोडं रिलॅक्स व्हा, मी चहा मारून येतो आणि मग नंतर सुरू करू. ओके, ऑनलाइन पे जो लोग हैं, आई एम टेकिंग अ पॉज फॉर 5 मिनट्स. इज इट ओके फॉर यू? Yes, sir. Apart from this, meanwhile, any suggestions about the pace with which I am going, slow, fast? Sir, do we have to take down the notes?
किती वाजता येऊ द्या गाड़ी सीनियर को प्रपोज कर रहा था फॉर्म के लिए तेरा वीडियो वायरल हो गया हाय तेरे बात इसको तो मेरे पास हाय इसने दिया है मैं भी समोर नाही हाय तू समोर आला तो विचारायला गेला होता प्रॉब्लेम सोडला गेलं तर प्रॉब्लेम होता ठीक है दादा से निकल जाओ मैं एक्टिवा पे चले बाय उधर उठला है वो ऐसा ना हो चले बाय यार तेरे को कुछ मिल रहा है ये करना उधर का अच्छा तेरे बहुत बुरा लग रहा है तेरे आई फ्रेंड लड़की अरेंज कर दे बस 500 रुपए रेडी ओके बाय ये भी खबर सुनने के तुरंत ही मेरे
So, am I audible? Hello. Yes, sir. So, I've come across some queries like whether one was whether you're supposed to take down some notes or not. In today's session, I don't expect you to take down anything. Just look at and listen to what I'm talking about. And anyway, this PDF will be shared with you, and this much is more than sufficient from examination point of view also. But then hereafter, in next session, as and when the need arises, I'll be asking you to take it down. Okay? Yes. So, sorry. तो ये सारे प्रॉब्लम्स देखे गए, और जैसा मैंने कहा कि शायद यही एक कारण रहा होगा कि DBMS का कंसेप्ट आ गया एग्जिस्टेंस में. So now coming to exactly what is DBMS. So before we get into the definition, these all are textbook definitions, okay? और in the most natural form भी अगर हम लोग फ्रेम करने की कोशिश करेंगे ये डेफिनेशन, तो वैसे ही जाएंगे. डेटाबेस क्या है? कलेक्शन है डेटा का. तो थोड़ा रिफाइन अगर हमें करना है इसको, तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा कहा जाता है. क्या कहा जाता है? इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा. अच्छा, इंटर रिलेटेड डेटा ये वर्ड इसलिए आया क्योंकि नॉर्मली देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेइंग दैट रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ डेटा कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन डेटाबेस. तो अगर डेटा कलेक्शन हो रहा है तो उसके पीछे कुछ रीजन और उसका रिश्ता होना चाहिए. नहीं तो मैं कर रहा हूँ डेटा कलेक्ट बेसिकली ओके रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स and their achievement in the 12th standard, and then okay CET and whatever, and then what I record is the score in some T20 match. So it doesn't make any, it's a number, it's a data, but then it doesn't have any relationship with the intention what for what I am collecting the data. So random assortment of data is not a database. So कुछ ना कुछ रिश्ता होना चाहिए. That is the reason ये definition आती है कि the database is a collection of interrelated data. Okay? और जो पर्पस के लिए जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसे कभी कभार मिनी वर्ल्ड कहा जाता है. क्या कहा जाता है? मिनी वर्ल्ड का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप डिजाइन कर रहे हो DBMS, कॉलेज के लिए आपको कुछ एक एप्लीकेशन बनाना है, उसके लिए आपका डेटाबेस डिजाइन करना चालू है, तो कॉलेज आपका मिनी वर्ल्ड बन गया. तो कॉलेज रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप डेफिनेटली विल एक्सपेक्ट दैट डेटा ओनली विल बी अ पार्ट ऑफ our collection. Got the point? So then coming to the definition, what is DBMS? If database is a collection of interrelated data, what is DBMS? DBMS is a software system which is meant for managing the data, as simple as like this. थोड़ा सा refine करेंगे, so we'll say that a software system which
helps in variety of activities like storage, retrieval and management. तो basic expectation क्या है कि ये system आपको allow करे to store the data. ये system should allow you to, as and when the data is required, to retrieve the data back, and also okay look after other issues. और थोड़ा refine करना है तो ये definition ऐसी जाती है कि database management system is a general purpose software system. वहाँ लिखा है it is a general purpose software system which facilitates in the process of defining, constructing, manipulating and sharing the data. अभी defining का मतलब क्या है, constructing का मतलब क्या है, manipulation का मतलब क्या है और sharing का मतलब. Defining की जब बात होती है, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको ना स्टूडेंट डेटा बताऊंगा और आपको रिकॉर्ड करना है. तो आप मुझसे जरूर पूछोगे कि स्टूडेंट डेटा मींस व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट यू आर सपोज टू रिकॉर्ड, ये सुनो. फिर मैं इसका जवाब दूंगा कि रोल नंबर मुझे चाहिए. आपने रोल नंबर, आई विल स्टार्ट डिक्टेटिंग, यू नीड टू रिकॉर्ड, यू विल बी राइटिंग डाउन दोस डिटेल्स, रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, जेंडर and the branch. Are you okay with this? You tell me how you can visualize this, how you'll be taking down this, in what format? Table. So table is a definition, formatting is a definition. तो एक उसका ना ढांचा तैयार करने का काम जो होता है वो क्या है, डिफाइनिंग है. और हम लोग देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज एन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL, create table वगैरह वगैरह. So this is called as a definition. समझा ना? Just I am still, we are not talking about any data. We are only deciding this is the way, this is the format in which we want our data to be organized. So this is defining. Once that definition part is done, once you start visualizing a table, let us assume that this table comes into the existence. Construction is an attempt to populate the data. Populate the data का मतलब क्या है? Insertion. So that is called as an construction. तो आप construct कर रहे हो, you are populating basically, okay? So that is called as an construction. उसके बाद में मैंने क्या कहा? Manipulation. यार अभी डेटा आपने एक बार रिकॉर्ड करने के बाद में कॉमन सेंस है कि जो मैंने रिकॉर्ड किया वो क्या सदा, ऑलवेज, फॉरएवर मुझे वैसे के वैसा चाहिए, या आई एक्सपेक्ट अ प्रोविजन गिवन फॉर मी टू चेंज इट. चेंज इट इज अ मैनिपुलेशन. गॉट द पॉइंट? So I should be able to modify it, update it. Then if something gets recorded and then we realize that the relevance of what we have recorded has been lost, gaya abhi uska importance nahi raha, so what operation you would like to perform, tell me. If there is a file in your hard disk and you realize that the relevance of that file is no longer applicable, kya karoge? क्या करोगे? डिलीट कर दोगे ना, सिंपल है. तो डिलीशन ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ एन काइंड ऑफ एन मैनिपुलेशन. गॉट द पॉइंट? सो यू expect this software system to allow you to define, allow you to insert, allow you to perform manipulation, and in addition to that, whatever you record should be a shareable, should be in a shareable environment. Means if I do it for one application, the other application should also be able to access it. And that is the reason, my dear friends, normally there is a practice of saying that DBMS offers, please look at this. हे जरा वाचा. Integrated and shared environment. DBMS offers integrated and shared environment. Integrated का मतलब है कि whatever you record is getting recorded independent of the application. It is not pertaining to one particular application. Okay, it is happening for one organization. So that is basically at a back end, you have a database. Okay, and then the DBMS is an extra layer which comes into the picture and says that
I will look after all these issues. I will facilitate in the process of definition, construction, manipulation and sharing. और ये जो database backend पे पड़ा है, वो integrated है. एक single unit समझा जाए. It should be treated as if it is a single thing and is shareable. So now you start developing n number of applications for that organization. आपने library management system डाली, examination system किया आपने, okay, accounts किया, ये सारे applications same data को access कर सकते हैं. And beauty of this is कि DBMS बोलता है कि तुझे ये format पसंद नहीं है, तो तुझे जो format में चाहिए, I have that mechanism, I can present it to you. So because of this integrated and shared environment, the potential drawbacks, what we have discussed basically, okay, pertaining to traditional file processing system, they are tackled, they are taken care by the concept of an DBMS. Okay, so Baki distribute and all those things you please read out. I will not reiterate on those historical perspective, but one should obviously, okay, remember about all those great contributors and personalities. So what I'm trying to tell you is that look at this diagram. तो फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच में कैसा है कि if you look at कि हर एक एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है, हर एक एप्लीकेशन के अपने अपने फाइल्स है, दिखाई दे रहा है यहाँ, अपने अपने फाइल्स है. यूजर्स एप्लीकेशन को यूज करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फाइल्स के अंदर से डेटा निकालेगा, डालेगा एंड सो फोर्थ. हर एक एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट है. अभी डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस इज एन एडिशनल लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. तो एप्लीकेशंस को डायरेक्टली डेटा के साथ खेलना अलाउड नहीं है. अब महसूस कर रहे हो ये? आर यू एबल टू विजुअलाइज एंड रियलाइज दिस? बीच में एक लेयर आ गई, कौन सी लेयर है ये? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाली लेयर है, लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है. तो डीबीएमएस इज एज गुड एज सेइंग दैट एप्लीकेशंस whatever you want to do, whatever operations you are interested in, you send me the request. I will intercept, मैं उसको पकड़ूंगी जो भी है. I will intercept that request. I will interpret it, उसका मतलब समझने की कोशिश, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड वो अगर वैलिड है तो then I will perform that operation on behalf of you and I will send back you the result. So this is one additional layer which has been inserted, provided, and that is called as an DBMS. And because of this additional layer of abstraction and because of the integrated and shared environment, all those potential drawbacks what we have discussed, they are taken care. Okay, and there is one more thing which I want immediately you people to notice. इकडे बघा, फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच में आपको दिखाई देगा कि बंदे जो है ना, यूजर्स जो है, एंड यूजर्स, इन्हें एंड यूजर्स कहा जाता है. यूजर्स, एंड यूजर्स जो है ये एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन फाइल्स के साथ खेल रहा है, दिखाई दे रहा है. इन डीबीएमएस there is one more additional facility feature provided, and I want you look at this. What is it? Is it necessary? Please answer my question. Is it necessary for user to access the data should always rely on applications in DBMS? सांगा, इसका मतलब है यूजर को अगर डेटा एक्सेस करना है तो क्या उसको सदा के लिए ऑलवेज एंड ऑलवेज एप्लीकेशन के थ्रू जाना पड़ेगा या दूसरा ऑप्शन है अवेलेबल? बताओ. डायग्राम करें प्लीज, लुक एट द डायग्राम. है क्या ऑप्शन? क्या है? एसक्यूएल. तो दिस इज बेसिकली एन क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट व्हाट डीबीएमएस ऑफर्स. तो डीबीएमएस क्या बोलता है कि यू कैन ऑल्सो फायर अ क्वेरी and you firing a query will serve you a purpose. तो ये spur of the moment की जो मैंने ड्रॉबैक मैंने कहा था ना कि डेटा है लेकिन डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग है क्योंकि वो क्वेरीज एंटीसिपेट किए नहीं गए थे. तो ऐसा सोचो अभी डीबीएमएस में ये प्रॉब्लम आता है और एप्लीकेशन में अगर वो सपोर्ट नहीं है तो डीबीएमएस बोलता है यार वो एप्लीकेशन क्यों वापस डेवलप करेगा एंड मॉडिफाई करेगा. काम कर, सिंपल सेलेक्ट, ओके, फ्रॉम वेयर, ये जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है फायर कर, तेरा काम हो जाएगा. You don't have to rely on manual work there. So that is a beauty of basically, okay, this query language.
सो ये टिपिकल सिंपल एनवायरनमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एंड आई थिंक it's a time for me to just conclude with the today's session. That is more than sufficient. पहिला सेशन आहे, तर म्हणजे कशामुळे मी सांगतो तुम्हाला, ऐसा एक एक्सपीरियंस रहा है कि नया सेशन जब शुरू होता है तो दो पॉसिबिलिटीज बनती है. एक तो जो है वो भाग जाते हैं, बनता है चान्स. दिस इज माय एक्सपिरियन्स. अरे अरे कोण आहे, असं होऊ शकतं. और दूसरी पॉसिबिलिटी है कुछ नए बंदे भी आते हैं. तो इफ फर्स्ट सेशन नॉर्मली वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू वन एंड थोड़ा शॉर्टर स्पैन रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कर लिया तो बाद में जो बंदे आते हैं वो दे विल बी रेजिंग लॉट मेनी क्वेरीज. So that is the reason I think it's the right time for me to conclude with the today's session. But then if now I'm open for all sort of queries. If you have any suggestions like someone said, I'll be telling you when to take down the notes and so on and so forth. I'll be doing that definitely. Suggestion was the screen initially shared was not visible to those who are attending in online form. I try to improvise on that front. So scope of improvement is always there, and that is the reason. It's only because, and it's only it depends on the feedback what you give and keep giving. Basically, it is you and me in a very friendly environment. You keep telling us all your concerns. So if you have at all those who are there on in online platform and those who are in front of me, काही suggestions असतील तर please let me know. आतापर्यंत बेसिक समजलंय सगळं? थँक्यू. चलो थँक्यू. सर हाँ सर EXTC को प्रोग्राम्स रहेगा या इसमें प्रोग्राम्स रहता है ये सब्जेक्ट? प्रोग्राम्स नहीं है बेटा, इसमें ना क्वेरीज होती है, तो सबके लिए सेम ही सिलेबस है. एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक EXTC जो बंदे हैं ना उनको है, और मैं बाद में आपको बता दूंगा. 2 पन्ने का टॉपिक है वो, टेंशन मत लो. ओके. और सर आपकी नोट सफिशिएंट रहेगी ना? टेक्स्ट बुक खरीदने की जरूरत 100%. अभी टेक्स्ट बुक नहीं लेना है ना? मेरा ये कहना होता है कि टेक्स्ट बुक रखना अच्छी बात होती है सेहत के लिए, लेकिन मेरे जो नोट्स रहेंगे दे आर मोर देन सफिशिएंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके. ओके चलो. यस थैंक यू. चला रे मित्रांनो, चला. थँक्यू व्हेरी मच.